The Canadian media mocks Justin Trudeau. Remember, Justin Trudeau was in India to participate in the G20 summit, and right after that, we saw how the pro-Khalistani elements were on a rampage in Canada, raising their voice against India. And the Prime Minister had, in fact, raised that issue with Justin Trudeau. Now we're given to understand that the Canadian media is mocking their own leader. और ये जो खबर आ रही है, जहां तक जो सवाल उठाए जा रहे हैं कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, वो फिलहाल अभी भी भारत में ही हैं, क्योंकि उनका प्लेन अभी बताया जा रहा है कि कनाडा से एक दूसरा लाया जाएगा ताकि वो वापस अपने देश लौट सके. बट दोस क्वेश्चंस दैट आर बीइंग रेज्ड, और इसी के ऊपर बड़ा सवाल उठता है क्योंकि भारत की तरफ से वॉक द टॉक का जो एक तरह से जो सुझाव है वो दिया गया है कनाडा को. और अदिति, अगर हम समझ पाए कि क्या सवाल अब वहीं के जो मीडिया है, कनेडियन मीडिया है, वो सवाल उठा रहे हैं अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर. Well, we have seen, Amita, how criticism has been increasing upon the Canadian Prime Minister. First, India asked to condemn Khalistan, Trudeau didn't. Then, Prime Minister raised the Khalistani issue in the pull-aside meet that was on the sidelines of the G20. Trudeau's response is much awaited. Now, the Canadian media is asking questions on how he has been criticized in India and at the G20 summit. Again, Trudeau's response is nowhere to be seen. Now, what we are seeing is the Canadian opposition leader is taking on Canadian PM Justin Trudeau. Now over here we have Pierre Poilievre's tweet, who is saying that putting partisanship aside, no one likes to see a Canadian Prime Minister repeatedly humiliated and trampled upon by the rest of the world. And over here, if I can show you, is the Canadian media which had put up this headline, "This way out." Now over here you can see Trudeau with Prime Minister Narendra Modi, and this was the headline. This is not an Indian newspaper but the Canadian media itself. Now you can see how much respect is the Prime Minister getting it out of this G20 summit. Absolutely. In fact, the leader who in fact is mocking Justin Trudeau is from a party that gives support to his government, Justin Trudeau's government. And often the accusation is that it is under this pressure that Justin Trudeau appeases the vote bank. And that's why, he goes soft on the Khalistani elements. That's a allegation that has often been leveled against Justin Trudeau. Now, Jagmeet Singh has put out this tweet और ये कह रहे हैं कि जो भर्त्सना या क्रिटिसिज्म हो रही है जस्टिन ट्रूडो की, वो डिजर्व करते हैं. So that is actually the question that is also being raised as far as Justin Trudeau is concerned, because he seems to be justifying, rather saying that he deserves this criticism because apparently he seems to be siding with India and seeking to undermine Canada's sovereignty and engages in foreign interference, which is not leadership. तो Justin Trudeau की leadership के ऊपर ही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं जगमीत सिंह. लेकिन यहीं पे अगर जस्टिन ट्रूडो की भी बात करें, उन्होंने भारत के साथ जो बायलैटरल भी करा था ऋषभ, वहीं पर जो कड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देते हुए नजर आए थे कि पहले जितने खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उस पर एक्ट करे जस्टिन ट्रूडो. Well, definitely. If you see the way Justin Trudeau was in India and he was reprimanded by his Indian counterpart, now in the local media, Canadian media में भी अब देखिए तो उनके ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री सच में एक्ट नहीं कर रहे हैं, कि पूरी दुनिया उनके ऊपर सवाल उठा रही है. और भारत में भी हमने देखा कि ट्रूडो को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई. जहां पे हमने देखा कि चाहे जो बाइडेन हो, चाहे बाकी जितने भी राजनेता हो वहां से आए थे, उनको काफी इज्जत दी गई. लेकिन ट्रूडो के साथ हमने वो गर्मजोशी नहीं देखी भारत की तरफ से भी. हाँ, ये ट्रूडो के आसपास के लोगों का कहना ये भी था कि भारत के लोग पोलाइट थे, लेकिन पोलाइट से आगे कुछ नहीं.